Anuji, good evening. Can you hear me all? If I'm audible, please say yes in the chat window so that we can start. Chetan, good evening. कैसे हो आप? Am I audible? Okay. We'll wait for another 2-3 minutes. Let everybody join and then we'll start the live session. काफ़ी देर बाद कर रहा हूँ, maybe around 7-8 months के बाद. So let's see क्या है, what is my market view, what I am planning to buy, sell. We'll discuss that. And in the starting, I'll just give a disclaimer that it is not a buy-sell recommendation. The trades, what I do, will be mine, and you can decide for yourself that how much money you want to put in into the trade. Avi, good evening. कैसे हैं सर आप? We'll just wait for others to join. If anybody can put a message in the WhatsApp group that I'm live, so we can have everybody online, so we don't miss or repeat any questions again. औजा सर, गुड इवनिंग. कैसे हैं? बहुत देर बाद बात हो रही है हमारी. Okay. 3:30 as promised. We'll start as per time. ओके, पहले मैं मार्केट व्यू कवर कर दूंगा, उसके बाद आई विल टेक योर क्वेश्चंस. इज इट गुड? सो मार्केट व्यू विल टॉक अबाउट निफ्टी. या हाँ सर, थोड़ा बिजी हो गया था बीच में, दैट इज़ वाई लाइव सेशन नहीं किए. एंड कुछ मार्केट में था भी नहीं. लास्ट अपडेट के जब मैंने दिया था अक्टूबर नवंबर में आई थिंक, तो आई टोल्ड सिट ऑन कैश, डोंट इन्वेस्ट, वील गेट गुड रेट्स इन मे बी मार्च, अप्रैल और जनवरी, फरवरी. आई सो टोल्ड दैट keep waiting for the budget, let the budget, Indian markets budget come, and big event was also planned, US elections. So there's always a saying in the stock market, when US catches cold, the world sneezes. तो वही हो रहा है सर. US has caught cold and now everybody is sneezing. So let's see how good we can make out of this situation and what all we can accumulate at the discounted rates. The summer sale has not yet started. So let's see what we can buy or what we can do to benefit our portfolio, what benefits we can add to our portfolio. Am I audible and my voice is clear? If everything is good, please say yes in the chat window. फिर start करते हैं. जो पुराने सेशंस थे वो भी अभी लाइव कर दिए हैं मैंने. आई थिंक वो पहले प्राइवेट किया हुआ था मैंने, सो आई मेड दोज लाइव ऑल्सो, सो यू कैन सी द चार्ट एनालिसिस एंड ऑल ऑफ द लास्ट प्रीवियस सेशंस ऑल्सो. Okay, let's start. We'll talk about Nifty, Banknifty, and Divanshu. Good evening. Good evening. Okay, thank you. We'll talk about Nifty first. Sir, link is there in the. Ashish, good evening. Link is there in the. I think WhatsApp may be or Telegram may be, so you can share it with anybody who wants to join. Okay. Now we'll start with the Nifty. First I'll do the Nifty analysis, then Bank Nifty analysis, and then we'll talk about the what all is going on in the market and what all we have to accumulate or what all should be our strategy for next few days. For the next week की बात कर लेते हैं. Okay, now what has happened in Bank Nifty? The banks, what are major events which have happened? The max, two major banks, HDFC Bank and ICICI Bank, have given out good numbers. So when the banks give out good numbers, so we will have the Bank Nifty index giving us good breakout, and whatever happens, the banks will give us a good market support, because most of the constituent of Nifty is made up of banks. So Indian banks, major banks, HDFC and ICICI have given out good numbers.
Also, we can expect good numbers from the remaining Axis and the other Kotak Mahindra and all these banks, small banks. So मैं बैंक निफ्टी की पहले बात कर लेता हूँ. बैंक निफ्टी जो ये मैंने चार्ट मार्क किया था, आई थिंक इन द मंथ ऑफ मार्च आई हैड मार्क दिस चार्ट. So Bank Nifty had taken support at these areas of support. This was a ascending trend line जो मैंने mark की थी, ascending trend line. So when we make a ascending trend line, the market took support. This was in the month of July 2024. So the market took support, and this becomes our first critical area of support. So once the market has risen, there was a retracement rally. Then again it got reversed, got rejected from about 54,000 levels. Again got rejected at about 54,000 levels. So this became a potent area of resistance. So once I hope English ठीक है. अगर हिंदी में बोलना तो मैं हिंदी में भी बोल दूंगा. Whatever language you want me to say, I'll continue in that. So this becomes a potent area of support, resistance for the Bank Nifty. So that is why I marked now this upper descending trend line has got invalidated. Last week candle was very crucial. I was waiting for this thing to happen. Now this thing has happened, so the Bank Nifty has shown us good support. Now this good breakout has taken place because the results, as I said, ICICI और HDFC के results are अच्छे हैं. English okay ठीक है सर अनुज सर. तो HDFC और ICICI के results अच्छे हैं, इसलिए ये breakout भी हुआ है. Second thing is जो इसको support कर रहा है, the numbers which have come out. If you see the global numbers of the banking sector, they are good. So अगर global numbers अच्छे हैं, banking sector will lead the rally whenever we come back to the bull rally next phase. So bull will be led by the banks. So how will they be lead? Because this index, the banking index, has shown commitment on the higher time frame. When I am talking on the weekly time frame. So on the higher time frame, when banking index has shown a commitment, we can say that we will see some support happening, or the banks will move in a better way. So abhi, as per technical analysis, what should happen now? This breakout has taken place in the banking index. So I expect a rally which will take a bounce back. Maybe a bounce back we will see towards this descending trend line, upper descending trend line है ये जो, इसके ऊपर एक bounce आएगा, and then if it continues like this, then it is this rally which will happen after the bounce back will show the commitment of the bulls. So show bulls are committed to move the prices higher. So if we roughly draw a target from here till from the bottom of the descending trend line, upper descending trend line, and the lower descending trend line, अगर इसके बीच में मैं ये target roughly लेके चलूँ और यहाँ पे ये target इधर मार के चलूँ, so somewhere I expect 61,000 coming in Bank Nifty. This is not today, tomorrow, or in the coming week. After this rally starts, so I expect if we break out, this breakout holds this retest which will take place. जब ये retest hold करेगा, उसके बाद जो bounce back वाला rally आएगा, so we can expect 61,000 on charts in Bank Nifty. So we will not add any stocks right now. We will wait for the retest. This breakout candle has come now, retest of the trend line, and then this bounce back which takes place. So we will add stocks somewhere here when the retest has happened, और जब ये retest होके bounce back होगा तब that is the time. We have already added HDFC at 1370 levels, if you remember. This was updated. Now HDFC is trading somewhere around 1850 के आसपास. So that is how we will start adding. I will start adding my stocks over here. So this is my plan to add stocks in Bank Nifty, banking stocks, because मेरा limited exposure है अभी तक banking stocks में. The stocks which I am looking to add in banking sector will be SDFC. Though I am holding SDFC, as I said, 1375, 1380 के आसपास हमने add किया था, if you remember. This was done in the month of last year, October, November के आसपास, and then in January, February also when the market had corrected, so that time also we had added. And similarly, I will add ICICI, and I am looking to add IDFC first. So why IDFC first? I will discuss this in the some of my later subsequent live sessions, that why I am planning to add IDFC first. उसके ऊपर एक वीडियो कर लेंगे. So आपका कोई क्वेश्चन है अभी बैंक निफ्टी के बारे में? आई हैव कवर्ड बैंक निफ्टी. इफ यू वांट टू आस्क, आई हैव टोल्ड यू माय प्लान ऑफ बैंक निफ्टी एंड व्हाट ऑल आई एम गोइंग टू ऐड.
in Bank Nifty that we will talk about. So if you have any questions in Bank Nifty or any banking stock, we will see that. HDFC ka I'll just cover it why I'm planning to add. If you see, I've already marked my charts. So now again, okay, मैं पहले की कहानी सुना देता हूँ HDFC का क्या किया था मैंने. HDFC, if you remember, this was the point when we had started adding HDFC in जब ये फॉल आया था HDFC का ड्यू टू बैड रिजल्ट्स. सो 2024 जुलाई अगस्त जब मैं बोल रहा था, तो दिस वाज द लो विच वाज मेड बाय HDFC. इट वाज 1375 के आसपास का लो था. So once the low was made, and see after that HDFC has started making higher highs and higher lows. So still that higher lows, this low was not able to break the previous low which was there. This was the major low. So that is why I am keeping HDFC up in my radar, so that we just follow the charts. We don't listen to the noise which is there on the social media or anywhere. Just see the chart is telling you that the stock at this level at 1600 1580 levels के बीच में, it is showing a good amount of support is there for the stock, and it is holding this level. So mind you, this is a weekly time frame chart. So one candle is representing 1 week. So once a good amount of support, and there was no increase in the volume with the drop in price. So you see, if the drop in price, if those who have done my classes and who have done, you see the drop in price was there, significant drop in price was there. Do you see the volume rising? No. So this is also another indicator that people who are holding on to their stocks, they are not selling. There's no panic selling which is coming into the stock. So when there is no panic selling, तो आपने क्यों बेचना है यार? आप भी रख लो, आप भी ऐड कर लो इधर. This is the footprint, the big mutual fund houses footprint which is there on the chart. So this is how you read the charts. So now when we see that the stock has entered into the rising channel, तो ये rising channel में घुस गया. So upper resistance is somewhere around 2200 rupees. So if we add at 1906, and this is the level where we can add between 1800 to 1900 और 1780 के बीच में कभी भी इसको ऐड करेंगे for long term, it is a good buy at these levels, because it is still staying above the major zone of resistance which it had broken earlier. Still the price is holding on to that. So simple logic, there is no ifs and buts. And when I put Ichimoku also, like I always use Ichimoku, I will hide other indicators, and इसमें इसलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कि it is simple, because most of the people, followers, they don't understand Ichimoku. So I'll just show you what is happening on Ichimoku. Just see what is happening. Now इसमें I have a lot of followers who are there, who are my ex-students also. So just see, the Ichimoku has already given us an indicator of buy. See over here. So there's a bullish crossover which has taken place. How many know Ichimoku? किस किस को Ichimoku आता है सर? एक बारी yes बोलो चैट विंडो में, so that मेरे को पता चले कि Ichimoku किस किस को आता है. I'll have a sip of my tea. एक बारी बताओ मेरे को. ओके अभी सर यस मुझे नहीं आता. अनुज जी आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी. ओके अभी ये देखो, बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है अबव द क्लाउड. अभी सर यू नो व्हाट वी डिस्कस्ड इन द क्लासेस लास्ट टाइम. सो द बुलिश क्रॉस ओवर अबव द क्लाउड ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. सो हाउ मेनी प्लसेस वी हैव? डू वी हैव एनी ऑब्स्टिकल इन फ्रंट ऑफ द चिकाउ स्पैन? नो. So this is also one plus. Then we have a bullish crossover taking place above the cloud. This is another plus. Then bullish strong, absolutely. Then we see the cloud. See the cloud. The shape of the cloud is telling us something. See. So we had two pluses earlier and one more plus over here. So once we have a crossover taking place on the above the cloud, we don't have any obstacle in front of the checkout span, and it has broken and closed above the weekly zone of resistance. So everything is rising. So it is another plus. So once it is on a higher time frame, that is a weekly time frame. So what is stopping us to buy HDFC Bank?
बड़ा सिंपल तरीके से मैं सिखाता हूँ सर. दैट इज व्हाट आई से. मार्केट्स आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वी मेक देम कॉम्प्लिकेटेड. नाउ दिस हैज गिवन अस अ बाय सिग्नल. Why should I wait? Maybe I was waiting for this level to break. Yes, I was waiting because I want to see the confirmation of the bulls. Any retest towards 1850, 1860 के आसपास का retest होता है तो it will be a good buying opportunity for HDFC Bank. ले लेना सर. मतलब और मैं I can't say ले लेना, मैं ले लूँगा सर. Because of the SEBI guidelines, I can't say that, but it is up to you. You want to buy it. Okay. HDFC Bank clear? Anything else? Any other bank you want me to cover? Okay. No bank. Then we will. चलो IDFC भी देख लेते हैं. Let's see IDFC. Now. इंडसइंड और SBI का भी था, चेतन सर का है उसमें क्वेश्चन, सो वी विल कवर दैट ऑल्सो. अभी IDFC, वाई आई एम वेटिंग फॉर IDFC टू टेक बाय IDFC इज द सिंपल रीजन इज सी इन IDFC अगेन द एरिया, दीज आर द लेवल्स विच आई हैव मार्क्ड. दिस इज द प्लेस वेयर आई विल प्लान टू बाय IDFC 79 के ऊपर. नाउ सम पीपल विल आस्क मी कि भाई सर अभी तो सस्ता मिल रहा है, ले लो. यार अभी सस्ता मिल रहा है, बट I am not, the trend is not confirmed. The charts, like you see the chart of HDFC and you see the chart of, I just pull both the charts over here of HDFC and IDFC. So you can see what is the difference in the chart. See. इसको मैं वीकली पे कर देता हूँ और इसको भी वीकली पे कर देता हूँ IDFC. Now you see. Where is the candle with respect to the cloud? बाकी मैं नीचे वाला सारा कुछ उड़ा देता हूँ. ओके. अब बताओ विच इज़ अ बेटर बाय सिग्नल. एनी लेमैन हु डजंट नो इचिमोकू, फिर भी आप यू कैन टेल मी विच इज़ अ बेटर बाय सिग्नल. कैन यू सी बोथ द चार्ट्स? ओके, कैन यू सी बोथ द चार्ट्स? HDFC is a better buy signal or IDFC first is a better buy signal. So but क्या होगा, लोग बोलेंगे कि ये सस्ता मिल रहा है, सस्ते वाला ले लेते हैं, उसका रेट भी कम है, बट इसी में गलती में फंस जाते हैं. यू सी नाउ अभी IDFC में क्या है, व्हाट इज हैपनिंग इन IDFC? IDFC here is a great amount of resistance is there in as with respect to the movement of the Chicago span, because it will go and bang its head against the candlesticks which are there. But here in the case of Chicago span, there is no resistance in front of the Chicago span. The Chicago is clear to move above the zone of resistance. So that is why. And also what Anuj is saying, the cloud is showing good amount of strength. See, a good amount of strength is being shown by the cloud. Aja bhai. See. A good amount of strength is being shown by the cloud. But here, see the cloud. What is the shape of the cloud? What is the cloud doing? It is a falling cloud. And whereas in this case, it is a rising cloud. So you will always go for a rising cloud for a bullish trade, right? Yes sir, yes sir. Third wave start हो रहा है. Yes sir, if you are following wave theory, then it is good. The third wave is about to start in HDFC Bank. ओके, सो दिस वॉज माई सिंपल ज्ञान फॉर HDFC एंड वाई एम वेटिंग इन IDFC. लूँगा बट बाद में लूँगा. ओके, निफ्टी की बात कर लेते हैं. ओके, निफ्टी का भी मैंने चार्ट मार्क कर लिया था क्लास से पहले, सो दैट ज़्यादा डिले ना हो चार्ट को लेके. मैंने इसीलिए मार्किंग करके रखा था. इचिमोकू को बंद कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी इचिमोकू बाद में. एंड ओके, नाउ बहुत ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ अभी. Now just see this thing, what I have written, being very selective in my approach. Why I have written this? A good bull run we all enjoyed. When this candle came, this was forming a kind of a, कौन सा candlestick pattern बना है? Can anybody tell me what kind of candlestick pattern is there?
3 कैंडलस्टिक पैटर्न, जिन्होंने क्लास किया हुआ है दे विल नो व्हाट कैंडलस्टिक पैटर्न इज दिस ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. डार्क क्लाउड, नो 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 no 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 just imagine, see these 3 candlestick. डार्क क्लाउड तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूं. शूटिंग स्टार, कृष्णा सर गुड इवनिंग. बेरिश हरामी, नो. एक और मॉर्निंग स्टार का उल्टा क्या होता है? अरे मॉर्निंग स्टार का उल्टा कुछ होता है? Bearish Harami, no. Okay, I will tell you what it is. Evening star, absolutely. Krishna sir, good evening. How are you? So it is forming a evening star. See, now if you remember what I told in my classes, just follow the candlesticks. They will tell you a story. So this is a story. That is why when this thing started, I had predicted that this may be the first target of 22,700 was my target. When we were sitting at about somewhere around 26,000. So a 4,000 fall in Nifty or in the index. That is why if you see repeatedly I was putting in Telegram, WhatsApp also, sit on cash. Sit on cash. I don't know whosoever followed, maybe he would have not got stuck at this level. This pattern has got formed on a weekly time frame, on the higher time frame. So the higher time frame holds more validity. But once it holds more validity, we give it that okay, this was the candlestick pattern. This is the now next zone of support. Here you see the Nifty came down, reacted to this level, then again went up, again broke this level, again came down, again went up. Now again this descending trend line, this descending trend line has got invalidated now, and Nifty has given a weekly close above this. But will I buy this now? Is this a confirmation of the trend? No. Why? Because the average volume is still less than the previous volume. अरे अगर मेरे को लेना है तो average volume has to be more. The confirmation, it should have been like this, somewhere like this, then it would have given. The price has given me a confirmation that it is okay, but the volume has not given me a confirmation that it is okay. So there's a contradiction between the price and the volume. So once there's a contradiction, it is a weak confirmation, right? अगर यही वॉल्यूम ऐसे होता जैसे अभी है तो it is a price is also saying yes and volume is also saying yes. So there is a agreement between the price and volume. So it would be a strong confirmation. अरे मेरा पेन को क्या हो गया? Strong confirmation, right? So since it is a weak confirmation, I will wait to confirm my trend. I will let this trend to consolidate. जहाँ पे मैंने लिखा ना लक्ष्मण रेखा 24,700 800 के आसपास. Once it clears this zone of 24,700 800 on a weekly time frame, if it gives a closing above this, I will start pouring in money now. So that is why मैंने लक्ष्मण रेखा लिख के लगाया हुआ है. Price had confirmed 2 weeks back but also fell down below the resistance. Absolutely, Krishna sir, because there the price, the volume was there, but see what candlestick the price made. It was again a bearish signal. Again now it has given a positive confirmation. Still the candlestick is resting on the zone of resistance, the previous zone of resistance which was there at 23,800. So I will wait before putting in my hard-earned money. I will wait to put my money only after we cross this Lakshman Rekha of 24,800, 24,700 levels. So still I am saying we will wait for another 1,000 points for the Nifty to give a confirmation on the bullish time frame. Yes, absolutely inverted hammer. अभी लोग ज्ञान देना शुरू हो गए हैं कि मार्केट रिवर्सल, वो सब न्यूज़ है. न्यूज़ में नहीं जाना. जो कैंडल कर रहा है और जो वॉल्यूम और प्राइस बता रहा है हम सिर्फ वो करेंगे. न्यूज़ मैं टीवी नहीं देखता हूँ. I see charts. That is why I tell you कि wait. The market will itself tell you, give a chance to get out, to get in. So if I clear all this this was the chance to get out. I think most of us who
get out. Krishna sir, you did my warrior mentorship program in I think August, September, August में September में somewhere. So that time also I said this is what I am expecting in the market. So this was somewhere this point only. So now this was the time to get out. The get in time will come once the you remember the analysis what I did at that time. So this is the time when we will get in. We will get in only after 24,700 levels or 24,800 levels. Once we break these levels, that is the time we will put in our money and go greedy. Right now, sit on cash. Okay. That was a quick update by me for Nifty and Banknifty. If you want to ask anything else about any other stock, SBI, somebody had told me to cover, I'll cover SBI. Or baki rest, you can also tell me whatever stock you want me to cover. लाइव सेशन बंद किया ना, पार्टिसिपेशन कम होगी. सिल्वर ओके. अभी सर पांडे जी आप अभी है ना, पांडे जी एंड अभी आर सेम आई थिंक. पता नहीं मैं भूल रहा हूँ या तो पांडे जी है ना ये. ओके नाउ आई विल कवर सिल्वर. ओके चलो सिल्वर कर देते हैं. लेवल्स मैंने बता दिए. इफ एनीबडी स्वर्धना यस आई विल कवर मदरसन सुमी डोंट वरी सर. सिल्वर कर लेते हैं देन वी विल कवर. सिल्वर का चार्ट मैंने आई थिंक कहीं डाला भी था. आई डोंट नो. सिल्वर देखो सर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कीप योर चार्ट्स मार्क्ड. ये लो सर सिल्वर. नाउ सिल्वर अगेन 1 लाख टूटेगा, 100% टूटेगा. bullish, yes I am bullish. I told you the level where this level has to break. Now why I am saying the 1,1,000 has to break. See, a zone of resistance getting formed, though double, this is like kind of a double top which has got formed over these critical zone of 1,01,000. So once it breaks above this zone, this was a stop loss hit rally. Again it will consolidate here and then maybe you will see this kind of a move coming in silver. So silver and all is bullish, nothing to worry. Silver, gold, everything is bullish, so there's nothing to worry. I also maintain a bullish view for silver till the time Trump uncle settles down and gold settles down. So that will keep on continuing. If you remember Trump in 1.0 also, gold saw a good rally and silver also saw a good rally. Okay, and now we will cover SBI and then Motherson Sumi. SBI किसने पूछा था? I am forgetting. I'll mark the chart. SBI मैं ज़्यादा follow करता नहीं हूँ, but I will mark the chart. Let me mark the chart in 1 minute and then I will ask. Now in SBI, if you see, a good amount of zone of resistance is at 878 levels. Okay, let me mark this chart. Okay, now I have done two things in SBI right now. This is the base area formation for SBI somewhere at 717 levels. So once it is forming a base over here, we are seeing a kind of a cup getting formed. So but the cup is getting formed at the zone of, what is this zone? This is again a descending trend line, right? So once this cup, then this kind of a handle I am expecting it to form, and once this kind of a handle is formed, we can see a spurt in the volume. Now what is happening? The volume is also shrinking over here, right? So बीच में मेरा पेन बंद हो रहा है. So what is happening? There is drop in volumes. You see the squeeze, volume squeeze which is taking place over here.
So once the volume squeeze is happening, the cup, once it gets formed, we will see another volume squeeze taking place, and then we can see a breakout in SBI above 740 levels for a target of 800, 885. A good small time frame या lower time frame का आपके ऊपर इसका वो swing trade बन सकता है SBI में. So if it breaks above 745, we can hold it for a target of 885, and with a stop loss somewhere around 710, 705. So this can be my trade once the cup is confirmed. The cup and the handle pattern is complete like this. So once this pattern is complete, we will see a cup and handle breakout in SBI. Okay, Motherson Sumi, is SBI clear? I have covered SBI. We will cover Motherson Sumi. Svardhan, Motherson Sumi का पढ़ते रहना sir. The more you get time to read Motherson Sumi, just keep on reading. Why? Because if you remember in the rally 1, previous time also, we played this move very beautifully. अपना ये वाला 214 वाला. We had entered somewhere around 132, 133 levels, and we played it till 213, 206 के आसपास I think I sold. And now again, this a major drop has happened. This is just nothing is wrong in the company. This is just the global auto sector had corrected, and most of its business being regulated in the European countries, so shrinking of the margins was there, and also the dollar price appreciation which was happening, that is also a cause of worry for the company. Okay, now अभी इसमें देख लीजिए क्या है. We have to wait for 132 levels to break. किसका क्वेश्चन था ये? I think Krishna sir had asked. Yeah, if it breaks, so we have to wait for this level to break. So once it breaks, so this is the level of 215, 220 levels we can expect. But entry should be above 138 levels with a stop loss somewhere around 130 if you're doing entry, 120, 110 के आसपास का stop loss with a target of 215. So we will wait over here. Okay. Krishna sir is asking another BEL. Right, let me cover BEL also. Okay. Now BEL, I'll just mark a pattern over here, just see what is happening in BEL. Okay. Now BEL again. Good bullish move. This is known as consolidation. See the volume squeeze taking place over here. So any break above this level of somewhere about 300 levels will be bullish for BEL. Right? So we will wait. Unless you want to take a short-term trade, buy at this level and sell at this level. So you buy at about 225 levels and sell at about 300 levels. Again it gets corrected. You buy again at 225 and sell because it is moving in a range bound movement. Or if you want to give a good big play, then buy above 300 levels or between 310 for a target of maybe above 400 levels in this case. Right? So there are two scenarios building up over here. We buy here at the lower channel and sell it at the zone of resistance, which is at about 300 के आसपास का इसका resistance आता है, 310 के आसपास. Or we buy above 300, 310 on the weekly closing basis for a target of 400 rupees. So either of the two you can choose. Okay. स्मॉल कैप इंडेक्स भी चेक कर दीजिए. करता हूँ सर स्मॉल टेक मीडियम टाइम फ्रेम पर 215. Okay, medium sir, see daily I'm saying that is why if I have to take a swing trade, I always try to see my chart on the weekly time frame, because more candles, the larger the time frame, the larger reliability is there. So that is why I say the long term friends are good. If you see the friends on the higher time frame, they are good. So go with the friends which are.
with you for more years, right? Okay. BEL, okay, BEL हो गया. अभी any, what is the next? Small is medium time frame. Yes sir, medium time frame. Yeah, medium time frame. बट लेना 230 230 के ऊपर मीडियम टाइम फ्रेम. इफ़ यू आर आस्किंग मी अबाउट द टारगेट देन इट इज़ फॉर लॉन्ग टाइम फ्रेम सर. एंड जस्ट रीड अबाउट, मैं आपको एक साइट बताता हूँ, स्क्रीनर. मोस्ट ऑफ यू मे बी नोइंग इट. आई जस्ट पुल्ड इट फ्रॉम माई अदर स्क्रीन. सो लॉग इन नहीं किया हुआ मैंने इसमें. ओके, आई जस्ट टेल यू. यहाँ पे आप डालिए मदरसन. इसमें चले जाना सर. एक बारी इनका ये ट्रांसक्रिप्ट और ये पीपीटी देखना. सो व्हाई आई एम टेलिंग यू, इफ बिफोर बाइंग अ स्टॉक जस्ट गो टू स्क्रीनर एंड रीड व्हाट द कंपनी इज डूइंग. जस्ट सी व्हाट दे आर प्लानिंग. रेवेन्यू 8%, EBITDA 13%, profit after tax is 20%. So normalized EBITDA is 25% up. This is on 9 monthly basis, like 9 monthly financial year 25 and 9 monthly financial year 24. So a very good company at a cheap valuation is available. And when you see, इसके बाद नीचे जाके इसका वो पढ़ना सर ज़रा. What are the plans? They have recently entered into EV growth, in EV and hybrids in China and India, North America, everywhere they are going, Europe. So the company's footprint is expanding like anything. उसके बाद एक और चीज़ है सर इसमें. I follow this stock very closely because multiple times I have taken position in this stock. सो अगर ज़्यादा नहीं पढ़ना तो इधर इसका एनुअल रिपोर्ट्स और ये देख लो, और जाके एक इसका वो होता है इमर्जिंग बिजनेस क्या है, व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट इज़ द प्लान फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. सो दैट इज़ ऑल्सो गिवन ओवर देयर. सो जस्ट सी दैट एरोस्पेस दे आर एंटरिंग इनटू एरोस्पेस एंड ऑल. गुड अमाउंट ऑफ डेट रिडक्शन हैज टेकन प्लेस. सी right? So you have to concentrate on the things like this, the positives which are there, what the company is doing. एक इनका tie-up भी हुआ था. I am forgetting the name of the company. They have done a tie-up also recently. So you can go on screener free of cost. Nothing is required. You don't have to pay any money for the paid software. And और ज़्यादा ज्ञान लेना है तो इसका क्रिसिल का अपडेट देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा, right? ओके, दिस इज़ जस्ट अ फ्री साइट, सो डोंट गो फॉर पेड साइट्स. अपना आराम से फ्री पैकेज में चलेगा. ओके, अनुज जी पूछ रहे हैं वारी रिन्यूएबल्स, सीमेंस. ओके, वारी Okay, now let's talk about Vari Renewables. Sir, just a technical view. I'm not very comfortable with this stock because see the rally and see the drop. And again, maybe a bearish trend is there on the charts also, and it has to show a good amount of commitment of the bulls to for the stock to move up. See. कुछ नहीं है सर. लोअर लोज कभी हायर, लोअर सर्किट अपर सर्किट, ये वो स्टॉक्स हैं जो सोशल मीडिया पे बड़े वायरल होते हैं. सो पीपल, इफ़ द वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट दी स्टॉक तो उसको मत उसके पीछे जाइएगा, ठीक है? अपना रिसर्च करेंगे उतना अपना अच्छा वो स्टॉक निकालेंगे. ओके, सीमेंस देख लेते हैं सर. Okay, now in case of Siemens, see the zone of rejection somewhere at about 4,200 levels के आसपास रिजेक्शन हुआ. डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, it formed a kind of a triple top over here, and now at the present levels it is forming a kind of a
base. So this is the zone where you can see a base getting formed somewhere around 2600 के आसपास. It is showing consolidation, yes, but this again becomes the zone of worry for the Siemens, somewhere around 3800 levels, where the base of the upper zone of resistance is there. So we can see a correction maybe taking place over here like this. A good amount of commitment of the bulls is required to break above the previous high. This is the previous high. So let's see, but it is nowhere near the zone of breakout of the previous high. So wait and watch, sir. Don't enter right now. Let the commitment come. जिसमें enter करना है, that I have already covered. Okay. Tejas. आपने एक चीज़ देखा, सेम स्टॉक तेजस का मैंने स्टॉक चेंज कर दिया, बट अगर मैं इसमें अंडू है, नहीं है अंडू, ये देखिए सेम स्टॉक, ये मार्किंग थी उसकी सीमेंस की, सेम स्टॉक तेजस लगाया तो वही सेम मार्किंग. सो लेट्स सी, वही सेम जोन ऑफ रिजेक्शन अगेन फॉर्मिंग अ बेस. अब इसमें एक चीज़ देखने वाला है कि दिस एक वो पैटर्न मैंने बताया था ना, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल. ये देखो, ये कप बन गया, अगर ये अभी हैंडल बन गया ऐसे, तो ये ब्रेकआउट हो गया, तो ब्रेक डाउन हो गया, तो ये जो आपका कप का बेस से लेके एपेक्स तक जो हम बोलते हैं, दिस इज़ नॉट अ एपेक्स इन दिस केस. सो दिस मच यू कैन एक्सपेक्ट द फॉल टू कम. सो you can expect somewhere about 315 levels if 659 breaks. So 50% drop is expected. ठीक है अनुज सर, पंगा मत लेना अभी, लेट इट स्टे रिवर्स फ्रॉम हेयर इफ यू आर नॉट बाइंग, इफ यू आर प्लानिंग टू एंटर अ स्टॉक, बट डोंट टेक पंगा एट दीज लेवल्स बिकॉज इट इज एट अ क्रिटिकल जोन ऑफ सपोर्ट. वंस दिस जोन ऑफ सपोर्ट ब्रेक्स देन द पैनिक सेलिंग विल कम. सो वेट एंड वॉच. ज़्यादा कुछ है नहीं, जान नहीं है सर स्टॉक में. ओके लाइक भी मार दो भाई. ठीक है सर, कोई बात नहीं, लाइक हुआ ना ही हुआ, नो प्रॉब्लम्स. ओके लेट्स नेक्स्ट एनीबडी. स्मॉल कैप इंडेक्स. ओके स्मॉल कैप इंडेक्स मैं एक बारी देख लेता हूँ. स्मॉल कैप इंडेक्स मैंने सारे सेव किए हुए हैं. आई जस्ट सी. वेट. आईटी, ऑटो, मेटल, FMCG, एनर्जी, CNX 500, रियलिटी, PSU, स्मॉल कैप. ओके अभी स्मॉल कैप इंडेक्स में किसने पूछा? अनुपम जी ने पूछा. किसने पूछा? अनुपम जी. स्मॉल कैप इंडेक्स में ना सेम थिंग इज़ हैपनिंग, जो मैं अपना अनुज जी को बता रहा था, वही चीज़ देखिए. नाउ ये हुआ, फॉल हुआ, ब्रोकन अबव. अब लेट्स सी इफ इट होल्ड्स दिस लेवल. सो there is nothing to worry in the index. The markets will take a reversal, but when this reversal will come is a point of concern. So we are supposed to wait till the clear signals of reversal come, right? So we will wait. Right now there is not much strength in the small cap index. Always the rally starts with the large cap index. Large cap उसमें भी अगर banks lead कर दें तो बहुत ही बढ़िया. आप देखना कोविड के बाद वाली रैली सबसे ज़्यादा किस में आई थी? सबसे ज़्यादा आया था बैंक्स में एंड ऑटो, आई थिंक ऑटो, या, एंड देयर आफ्टर द अदर सेक्टर्स फॉलोड. सो विल वेट फॉर दैट. ओके शिंडलर. ओके इन्फीबीम एंड शिंडलर, लास्ट 2 क्वेश्चंस. शिंडलर तो आपने काफ़ी देर से इसके पीछे पड़े हो अनु जी. शिंडलर इंफ्रास्ट्रक्चर, शिंडलर इलेक्ट्रिक. ओके पांडे सर, अभी आपका भी देखता हूं मैं ये इन्फीबीम.
अब देखो, क्योंकि जब मैं वैसे देख रहा था तो मेरे को थोड़ा सा डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि हो क्या रहा है स्टॉक पे. बट नाउ व्हेन आई पुट इचिमोकू आई गेट अ क्लियर आंसर दैट इट इज़ अ नो, बिग नो. वाई बिग नो? बिकॉज, अरे हट जाए यार. ओके, वाई बिग नो? आप खुद ही बता दो मेरे को. अनुज जी, वाई बिग नो? सी, ये देखिए, उसके बाद कितना रेजिस्टेंस है क्लाउड के नीचे. सो इट्स अ नो. बिल्कुल सर, कृष्णा सर कह रहे हैं रेड ओवर ग्रीन, बिल्कुल. अब यही चीज़ अगर इसी मार्केट में आपने HDFC बैंक को मैंने दिखा दिया. सो दैट इज़ हाउ यू पिक योर स्टॉक्स. थोड़ा सा नॉलेज लेने की ज़रूरत है. इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस. जस्ट सी, दिस इज़ अ रिवर्स सिनेरियो. पीपल विल गो अगेन फॉर द रिवर्स सिनेरियो बिकॉज इट इज़ कमिंग ऑन TV. बट यार HDFC बैंक के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा. सो मच एक्सपेंशन इज हैपनिंग इन HDFC बैंक, यू विल बी सरप्राइज्ड. अभी आप खुद ही बोल रहे हो मेरे को क्लाउड शोइंग नेगेटिव, देखा. सो इचिमोकू लगाया, आपको बता दिया उसने कि क्लाउड शोइंग नेगेटिव, तो वो आपके सामने है. ठीक है, दैट इज द रीजन वाई यू शुड अवॉइड द स्टॉक्स विच आर बिलो द क्लाउड इफ यू आर टेकिंग अ बुलिश ट्रेड. नो गो है, नो गो. ओके, लास्ट क्वेश्चन. इन्फीबीम. ओके, पांडे सर, कितने पे लिया आपने इन्फीबीम? बहुत भागा था ये पहले, आई रिमेंबर. ये पिछली वाली रैली में इसने पागल कर दिया था. 18 रुपये से सीधा 39-40 का लेवल टच करके आया था. और मिस भी किया था मैंने स्पॉट किया था इसको, बट देन आई मिस्ड इट. ओके, एनी पर्टिकुलर रीज़न? 17 पे लिया हुआ है. ठीक है सर, ये लगा कर रखो. प्रीवियस लो वाला स्टॉप लॉस, मे बी ये वाला 12 का स्टॉप लॉस विद द टारगेट. अगर आप 39 का लेकर चल रहे हैं तो गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है. 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है आपके पास. सो नो ट्रबल इन दिस. ट्रैक्शन तो नहीं बताऊंगा. ट्रैक्शन आपको बोलता रहा कब से बेच दो इसको. एक बारी 110 पे भी आया था, तब आपने बोला था सर मैं बेच दूंगा इसको और छुटकारा ले लूँगा और कुछ नहीं करूँगा. अभी कितने पे है? और आपने कहाँ लिया हुआ है? यहाँ पे. ये आपका ही टाइम का मार्क किया हुआ है चार्ट, याद है अनुज जी? हाँ, मेरे को याद है, पुराना साथी है आपका ये. और मैंने आपको तब भी बोला था कि छोटा नुकसान लेना हमेशा बड़े नुकसान से वो है, फ़ायदेमंद है. डोंट आर्ग्यू विद द मार्केट एंड डोंट आर्ग्यू विद द लेडी. बोथ आर ऑलवेज करेक्ट. ये ज़िंदगी का एक मंत्र है, याद रखना. कब का निकाल गया? ओके, निकल गए, वेरी गुड. ठीक है, अभी इसमें पंगा मत लेना. आप पूछ रहे हो तो पंगा मत ले लेना. राइट, दैट इज़ ऑल. गुड. एक 45 मिनट्स का हमारा कैचअप हो गया. आई विल ट्राई डूइंग दिस एवरी वीकेंड या एवरी नाइट के आसपास, या एवरी वीक करा करेंगे इसको. एंड बिकॉज अभी मौसम आ रहा है खरीदने का. सो व्हेन वी टॉक वी विल डिस्कस, वी विल गेट गुड आइडियाज़ एंड वी विल also try to absorb more. ठीक है, okay, thank you everybody for joining and take care of yourself and those who are near you. Rest, all the best. Sir, UPL और LIC चेक कर दीजिए. Okay, let me check UPL and LIC. UPL. देखो, नाउ हु हैड आस्क्ड दिस? अनुज जी. डेंजरस प्लेयर नहीं बनना यार, खतरों के खिलाड़ी है तो पुलिस या फौज में जाके भर्ती हो जाओ. बहुत खतरा है वहाँ पे. खेलते रहो, बट स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा के खतरा क्यों खेलना? ओके, नाउ सर, सेम थिंग. above the zone of resistance, let it break above 660 670 levels if you have not entered. This is my previous marking. It hit these levels of 450 also, and that was a good zone of accumulation. Why I had marked this level was based on the previous level which was there. I'll just show you.
सी 450 का मैंने कंक्लूजन कैसे निकाला था, दिस वाज बेस्ड ऑन दिस लेवल ऑफ सपोर्ट ओवर हेयर in the past. When you look left, again it was showing a reversal trend, consolidated over here, gave a rally, end move कहते हैं सर इसको. This is known as a end move. Stock moves, retraces and then moves up. So this is a end move also. So again it is consolidating over here. Any break above 660, 670 levels will be bullish. We can keep our target of about somewhere around 780, 750 in the medium term. Nothing wrong. If it is bullish on the daily weekly time frame, I can expect it to be bullish on the daily time frame also. I'll just show you the daily chart. See, now एक और चीज़ बता देता हूँ. वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आपने बुलिश देख लिया, जस्ट वेट फॉर, नाउ दिस इज अनदर क्लासिक एग्जांपल. ओके, नाउ जस्ट वेट फॉर दिस क्रॉस ओवर टू टेक प्लेस. अनुज जी, who had asked this? Who had asked this question? किसने पूछा था? अनुपम जी. So just wait for this crossover to take place. The Ichimoku to give you this kind of a crossover. The blue line moves above the red line. So once this bullish crossover takes place, it's a go signal, because then the momentum will increase. You will see a good price rise. The cloud will also start pointing up like this. Right? Okay. And next is LIC. Okay, let me see LIC. B sir, LIC is there inside the cloud in the daily time frame. And why I'm saying in the daily time frame, just see what is happening. We don't trade once the candlestick is inside the cloud. Second thing is, there's a good amount of resistance over here. This is known as the Senku span B. It is 56 periods data. So it is the strongest line of Ichimoku. So once it is the strongest line of Ichimoku, it will show you resistance over here. So don't bang your, the candlestick will go and bang this line which is there and show a sign of reversal over here. So we will not enter. Once the candle is outside the cloud, then we will see the shape of the cloud changing something like this, the Chicago span coming somewhere here, and then we can see a good amount of rally coming in for a target of about 960 levels from the present scenario of 830, 840. So any good entry can be taken in LIC above 840 levels for a target of 960, with a stop loss somewhere at about 803, 810 levels. So this is my analysis for LIC. Right? Okay. हाँ सर, ये अभी YouTube पे है रिकॉर्डिंग, क्या वो वहाँ पे होगा, आप देख लेना दोबारा, नो वरीज. लक्ष्य जैन. ओके लक्ष्य जी, आई जस्ट सी लास्ट क्वेश्चन. हिकल. Okay, I'll just cover Hikal. आपको हिकल का बिजनेस मॉडल पता है सर? लक्ष्य जी, you know what they do? A good stock in the auto segment. पढ़िएगा ज़रूर इसको. ओके, वीकली के ऊपर व्हाट टाइम फ्रेम व्यू यू वांट. ओके, नाउ सी, वेरी ब्यूटिफुल चार्ट, वेरी गुड क्वेश्चन. अभी देखो, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. नाइकी कवर कर देंगे सर ट्रेडिंग व्यू पर. नाइकी, हाँ कर दूंगा सर, नाइकी भी कर दूंगा. आई विल मार्क चार्ट एंड शेयर ऑन ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म. ओके, नाउ very good question. This I was mentioning in the previous chart which we were seeing of for LIC. उसमें क्या कह रहा था मैं, डेली टाइम फ्रेम पे इसको क्रॉसओवर होने दो. So this is an example of the crossover which has just taken place last week. ठीक है, मेरा पेन को क्या हो गया, बीच बीच में छोड़ रहा है. Okay, now you see there is no obstruction in front of the Chicago span. The crossover, bullish crossover has taken place over here.
above, and where is the crossover taking place? It is taking place above the cloud. So once the crossover is taking place above the cloud, all scenarios for a bullish trade are plus plus plus. See, no resistance, so 1 plus, bullish crossover, 1 more plus, crossover above the cloud, 1 more plus. So once all the three scenarios are getting aligned, we will see a bullish trade coming in HICL. And what is the cherry on the cake is, it's taking place on the weekly time frame, on the higher time frame. So I always say your friend should be from the higher time frame. So this is a higher time frame trade with all three pluses. A bullish trade can be taken in HICL, right? So now what can be the targets? Let's see what can be the target. This zone of resistance which is there somewhere. चलो मैं line मार देता हूँ यार. Okay, somewhere about 454. If it breaks a level of 454, we can see HICL moving on to 581 in the short term and 725 in the long term. So what is the result of our discussion today? We have found two good stocks. One is HDFC and one is late in the I meant no resistance. No sir, don't be cautious, because you see sir what is happening. There is इतना नहीं सोचना है सर, cautious नहीं होना. Cautious होना तब अगर यहाँ पे ये वॉल्यूम नहीं होता. Just see the volume which has come. The volume is increasing and this is weekly time frame के ऊपर it is higher time frame. So if you are holding, don't worry, cloud is rising, weekly crossover has taken place, it will go like this. ये ऐसे होगा और फिर जाएगा सर, राइट? आप देख लेना. इफ़ आई मे बी लेट मी नो. मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता HICL को, बट इफ दिस थिंग हैपन्स प्लीज़ गिव मी अ बज़ दैट दिस थिंग हैज़ हैपेंड सर, व्हाट यू हैड एनालाइज्ड. सो दिस इज़ व्हाट इज़ आई एम एक्सपेक्टिंग दिस. अब ये रिजेक्शन क्यों आया? बिकॉज दिस वॉज द प्रीवियस जोन ऑफ रेजिस्टेंस. सो प्रीवियस जोन ऑफ रेजिस्टेंस वो आएगा और फिर ये हैंडल बनेगा एंड देन इट विल ब्रेक आउट. सो इफ आई ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम हेयर टू द एपेक्स ऑफ द कप and extend it from the point of breakout to the top, this is what will be the target. So that is why मैंने 581 पे line मारा है. So 456 breaks in HICL, we expect 581 holds and then breaks, then 727 in the long term. This is my analysis for HICL. I'm not saying don't maintain stop loss. If you are entering at 456, your stop loss should be at 405, 410 levels, so that the risk reward ratio of 1:2, 1:3 is maintained, right? ठीक है जी. I meant no resistance. Okay लक्ष्य जी, थैंक यू, अमेजिंग एक्सप्लेनेशन. मैं थोड़ा बहुत ज्ञान देता रहता हूँ, वो आई लव टू सी चार्ट्स. आज बहुत देर बाद बैठा हूँ, मैं सुबह से चार्ट्स ही मार्क कर रहा था. Damn, my stop loss was 410 only. Absolutely sir, all technical analysis people think alike. I'm happy that my analysis matched your analysis and it is one more confirmation. नाइकी के जूते ले लेना, नाइकी का स्टॉक मत लेना. अनुज जी, नाइकी के जूते लेके 20,000 कदम करना, ठीक है? वो मैं आज अभी जा रहा हूँ करने के लिए, बट स्टॉक मत लेना. अभी यूएस मार्केट में पंगा नहीं लेना बिल्कुल, प्लीज़. मैं बताऊँगा कब लेना है. टेस्ला को 170 पे लेना है, ठीक है? अभी वेट करो, बहुत 240 पे है, वेट करेंगे, हम 170 पे लेंगे. गेटिंग मोर बूस्ट, गेटिंग कंफर्मेशन इज द बेस्ट फीलिंग. नो प्रॉब्लम सर, आई एम ऑलवेज देयर. यू कैन ऑलवेज आस्क मी क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप, द ग्रुप विच इज़ देयर. यू कैन ऑलवेज राइट क्वेश्चन. चलो, थैंक यू एवरीबडी. इट्स बीन 1 आवर. बात करते करते अभी ज़्यादा बोलने का स्टेमिना रहा नहीं मेरा. पहले मैं बहुत बकबक करता होता था, अभी नहीं करता हूँ. ओके, bye, take care, love you all. Thank you everybody for joining. Bye. टेस्ला सर बता दिया, टेस्ला 170 पे लेना है. लो टेस्ला भी देख लो जाते जाते. देखो मैंने लाइन मारा हुआ है उसमें टेस्ला में. एक सेकंड, ये देखो
टेस्ला देख लो, देखो 140 170 पे बोल रहा हूँ, ये इस वाले लेवल 180 170 के बीच में लेंगे सर टेस्ला। मैंने अलर्ट भी लगा के रखा है, देखो जैसे ही आएगा मेरा बाय करूँगा सर इधर, ठीक है। वेट कर रहा हूँ मैं, ये इसके बीच में खिचपिच में नहीं पड़ना। अभी क्लाउड का भी बेरिश क्रॉसओवर होने वाला है। सो जस्ट ये ऐसे कटोरा बनेगा और ये ऐसे गिरेगा नीचे, वेट करेंगे। 150 पे आएगा क्या, देखते हैं सर, वो तो मार्केट है, मार्केट में ये नहीं पूछना कहाँ जाएगा। आई हैव हर्ड टेस्ला विल गो टू 80। हाँ सर, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, बट जो मार्केट जो सब बोलते हैं वो मार्केट में होता नहीं। सो जस्ट कीप ऑन डूइंग योर एनालिसिस। सो वी विल वेट, अगर आता है तो देखेंगे क्या करना है। बट अभी यूएस मार्केट में पंगा नहीं लेना, हमारी मार्केट इज़ स्टिल वेरी वेरी गुड। तो उसमें स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लिए हमने, उनके साथ पंगा ले लो। ठीक है जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, रब रखा, बाय।